Hello everyone, very good morning. I hope you all are good and you all attempted the paper. So today in the class, what we are going to do, we will be discussing questions. Okay? I have simply taken a mix of questions from paper 1 and paper 2 and I have selected, questions which were really something that we could have done. So कुछ वैसे questions मैंने select करे जैसे first question is from your paper 2, question number 1. So how many of you tried this question and did it in fact? Anyone who got it done? Yes, हो गया था. Very good. Anyone else? Last class में ही we were discussing this thing, Doppler thing, right? So question was simply there is a detector which is going round in this circle. So detector है वो ऐसे circle में जा रहा है and then there is a source sort of thing. Yes, this is the source, right? A sound detector D moves with a constant speed on a circle of radius r and center at O, a point source of sound S. So this is the source of sound. It is at rest. So source velocity is zero. Object velocity, observer velocity, that is detector velocity, is not equal to zero. This distance was given as 2r. Question were asked like the ratio of maximum and minimum frequency recorded by the detector is 11 by 9. When it will detect the maximum speed and when it will detect the minimum speed. So अगर तुम लोगों को याद हो फॉर्मूला apparent frequency क्या होगा actual frequency getting released by the source into if observer is moving then you will write it like v plus minus v naught divided by what? V, right? Where V is the speed of sound, V naught is the speed of observer. So when it will be maximum? It will be maximum when it is plus sign. It will be minimum when it is minus sign, right? So basically, this detector will listen maximum frequency or minimum frequency in the cases where it is moving away from the source or towards the source. तो आप लोग ध्यान से देखो क्योंकि अगर अगर कोई भी इंस्टेंट पे अगर आप देखो ना सपोज इस इंस्टेंट की बात करो इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी इधर होगी राइट इट इज गोइंग इन अ सर्कल सो सबसे पहले तो ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच के लाइन को डिफाइन करना होगा नाउ दिस इज द लाइन अलोंग द सोर्स व्हाट इज along this line what is the velocity of detector so here it will be component of this v naught right it will be the component of v naught not exactly v naught so it is not the desirable case because we want maximum and minimum frequency for maximum frequency plus v naught होना चाहिए फिर फॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी माइनस वी नॉट होना चाहिए सो अगर तुम देखो एक ऐसा पॉइंट होगा वेयर वेलोसिटी ऑफ the detector will be along this line joining detector and source. तो आप एक काम करना कोई भी रैंडम पोजीशन ना लेकर सबसे पहले एक काम करो सोर्स से एक टेंजेंट बना लो सोर्स से अगर आप टेंजेंट बनाते हो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस and if your detector is in this position then definitely velocity of detector here will be along the line of source and detector and similarly there will be opposite point here just like this there will be opposite point here where the detector will seem like it is moving towards the line joining source and detector so here when it is going away its frequency will be what its frequency will be minimum and here the frequency is going to be what maximum डन है सो दिस इज द केस बेसिकली अब आप मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का जब रेशियो निकालोगे ना यू विल बी डूइंग व्हाट यू विल बी डूइंग v प्लस v नॉट बाई v व्हाट इज the ratio of maximum to minimum yes this divided by v minus v naught by v is 11 by 9 if you are going to do this you will be getting how much you will be getting v plus v naught into 9 is equal to 11 v minus v naught so if you will solve it, this is going to be how much? 11v plus 9v, and this is 9v naught plus v naught, so that is 10v naught, and this is equal to 2v. So what is the value of v naught? That is equal to 2v by 10. So that will give you basically how much? 34. So velocity of detector we have got, and that is equal to how much? 34
Is it 34? 2v by 10 we are getting, right? So that is 34 by 2 something, right? So you will get the velocity here. Just write the calculation properly. You will get the velocity. Once you have got the velocity, what you were asked the minimum time interval in seconds between recording a maximum frequency and minimum frequency. So what is the time interval between recording this? So basically, initially when it is listening the minimum frequency, it is here. And when it is listening the maximum frequency, it is here. So it has traveled basically this much. Done it? So how much angle it has traveled? That angle you need to check, and then you can easily calculate the टाइम टेकन राइट, क्योंकि अगर वेलोसिटी पता है तो ओमेगा लिख सकते हैं. ओमेगा क्या हो जाएगा, वी इंटू आर. ठीक है, सो यू कैन कैलकुलेट ओमेगा. इफ यू नो ओमेगा देन यू कैन कैलकुलेट टाइम. टाइम इज व्हाट, थीटा बाई ओमेगा. ठीक है, सो दिस वे यू कुड हैव डन दिस क्वेश्चन. कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिंपल ऐसा ही था. डन. तो आप इसको सॉल्व कर लेना, आंसर ले आना. ये क्वेश्चन कितने लोगों ने किया था? दिस वाज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, दिस वाज इजी क्वेश्चन आई वुड से. You just needed to know the formula. How many of you did it? Okay, सार्थक. ठीक है. Actually क्वेश्चन ना क्लियर नहीं दिख रहा है, बट ऐसा था. Graph of ln I against time. So there was a graph. Here it is ln I, and here is your what, time. And then it was said that there are two circuits here. Circuit one, and this is circuit two. In circuit one, switch is S1. In circuit two, switch is S2 basically. Okay. So initially, what was the case? Initially, switch were open, capacitor was getting charged, and finally we are closing the switch, removing the battery. So when you are closing the switch and removing the battery, what is the case here? There is a capacitor and then there is a resistor, like this, where capacitor is fully charged. So basically here the capacitor will start getting discharged through the resistor. And in discharging RC circuit, you already know current का value क्या लिखते हो? I naught e to the power minus t by tau. That is RC. This is the value we get, right? We have to plot ln I versus t. दोनों ही side आप ln को ले लो. If you will take ln on the both side, ln I will be, और एक काम करो, I by I naught लिख लो इसको. So ln I by I naught अगर मैं लिखूं यहाँ, ln I by I naught, and this is equal to how much? E to the power minus t by ln of e to the power minus t by RC. If you generalize it, then ln I is equal, ln I by I naught is equal to minus t by RC, because you already know the formula. Log का base अगर a है और यहाँ भी a का power something x है, then its value will become x. Here this is ln. ln means log का base e है, and here it is e to the power minus t by RC. So it will simply become minus t by RC. This is the calculation. If you break it, you will write it what? You will write it like ln I is equal or minus ln I naught is equal to how much? Minus t by RC. So basically ln I is equal to ln I naught minus t by RC. This is the equation, right? And there was a straight line given like this. One line was like this. One line was like this. So एक का slope is what? एक का slope is less, एक का slope is more, right? Which one is having more slope? Definitely the one which is what? Which is more slopey, or in this case we can see that it is this line, second line, right? If you call it first, if you call this second, the second has more slope, right? So slope value is equal to how much? 1 by RC. In first case, it is equal to 1 by R1 C1. In second case, 1 by R2 C2. और स्लोप से अगर आप देखो तो फर्स्ट का स्लोप इज ज्यादा. सो बेसिकली दिस इज ओके, स्लोप वैल्यू इज दिस वन. सो सेकंड का स्लोप इज मोर देन फर्स्ट का. सो दिस इज लाइक दिस. अच्छा, ग्राफ में क्लियरली देख लेना कौन किसका ग्राफ था. दिस वाज वन एंड दिस वाज सेकंड. ठीक है, वन का बिगर है, सो वन का स्लोप बिगर है, तो यहाँ पे मैंने ऑपोजिट डाल दिया. ठीक है, सॉरी मैंने नोटेशन गलत दी है आई गेस. Yes. This is your one and another one is your two. So now you can easily compare, right? This is one, this is two. And one ka slope is bigger, so this is this.
देखो इंटरसेप्ट दोनों का ही सेम है, वाई इंटरसेप्ट, so I नॉट इज सेम फॉर बोथ केस. And I नॉट in the discharging circuit, maximum current value is how much? E by R, where E was the basically voltage of the battery, which they used to charge the capacitor initially. So in first case, it is equal to E1 by R1, and in second case, it is E2 by R2. So from the graph, y-intercept से हमें knowledge क्या मिला? From the y-intercept, you can see ln I naught is equal to, in first case, is equal to ln I naught in second case. So basically, E1 by R1 is equal to E2 by R2. So these are the things we are getting. You can simply check it now, whichever the option is. You simply needed to remember the formula. Okay. How many of you went through this question? Yes. Okay. So what was the question here? Question is simple. देखो, question ऐसा है कि there is a cylindrical structure, sort of cylindrical solenoid, and this is of radius r, and this is produced in a uniform magnetic field of induction B. So basically क्या है ना, सिलेंडर सिलेंडर कैसा होता है, ऐसे लुक कर कर है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन लाइक दिस. ठीक है. So it is basically perpendicular to the plane of solenoid, right? And it is directed inward. So basically magnetic field here is cross, है ना? Because this is perpendicular to the plane of cylinder, or if we are considering plane of cylinder as the plane of our board, in that case, what is the case? Just give me 1 second. Okay. So here if you look at magnetic field is inward, ठीक है. अब तुम ये सोचोगे कि magnetic field is trapped in what region? Like we have done such questions before. We have done questions like there was this two parallel lines, and between these two parallel lines, some magnetic field, let's say inward, that was trapped. And then there was a charge coming here like this, and then we used to calculate things. And we have done it already. How this question is different from this, that we needed to figure out. So here basically your magnetic field is trapped between two parallel lines, and if you see here, here your magnetic field is trapped inside the solenoid, which is cylindrical in nature, right? Which is what? Which is cylindrical in nature, right? So अगर ये cylindrical in nature है, इसका magnetic field कौन सी shape में होगा? You can take it like it is contained in this shape. You agree? Let me know. What do you think? Yes. Will it look like this? क्या हुआ? Okay. One thumbs up I got, I guess. I don't know. ठीक है. So it will look like this basically. And here what is happening? अब देखो, previous case से हम relate करते हैं how we used to solve such questions. So the point at which it is entering, at that point, we used to see what will be the direction of force acting. Because we already know one thing, and that is if charge particle is moving inside magnetic field, then the trajectory will be circular. And if the trajectory will be circular, there will be center of that trajectory, right? So in this sort of question, first we used to indicate the center.
डन है। सेंटर हम कैसे इंडिकेट करेंगे? जस्ट बाय लुकिंग एट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो फोर्स का डायरेक्शन अगर आप देखो क्यू वी क्रॉस बी, यू विल सी, and v is, let's say this direction is x axis, and perpendicular to the plane, into the plane is taken as minus k cap. So velocity is across I cross, and magnetic field is across minus k cap, and I cross k is what? Minus j. I cross minus k is what? Plus j. And since we are doing this for electron, this force will be directed towards what? Minus j cap, right? So force is directed towards the minus j cap direction. Then towards minus j cap, we will indicate the center. And since this is acting as a center, here whatever trajectory will look like, it will look like this here. In this case, okay? Why here? Because this is the center. At this point, its velocity is this, so it has to be tangential to the trajectory. So we have drawn it like this. Then similarly here, come to this case. अब देखो आप यहाँ पे ध्यान से इसके जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने उसके सेंटर को पहले इंडिकेट किया. लेट्स से this is traveling like this. It is velocity is along the radius. It is said, I guess, flies into the solenoid along the radius. ठीक है. So velocity is basically along the radius. Suppose कर लो मैंने रेडियस का ये लाइन लिया, and velocity is along the radius like this. So it is like this. Now at this point, let's say I'm taking this axis as the x-axis. Which will be the y-axis? If I'm taking this as the origin, क्योंकि हमेशा we take that point at the origin as the origin where your charge particle is entering or exiting the entering the magnetic field. So this one I've taken as origin. I will draw y-axis. So I am drawing y-axis like this. So force is acting towards negative y-axis direction, and hence your center will lie somewhere here. मैंने center को यहाँ locate कर दिया, ठीक है? Because it is force is acting across what? I cross minus k cap. I cross k करोगे minus k cap plus j. Electron is here the charge, and hence force will be minus j. So this is the force. Done it? What will happen to this charge? This will travel like something like this, and it will exit somewhere here. ऐसे कुछ exit करेगा. At this point also, this velocity direction will be, because this is going to be the radius. This is going to be the radius. सही से diagram बनाना. So this is center, this is radius, this is radius. What we were required to calculate, then the time t during which electron moves in the solenoid. So you were required to calculate time for which it is inside the solenoid. अब आप कैसे इसको निकालोगे बताओ? You have already done this thing. How we can calculate it now? Any idea? लेट्स से, अब देखो टाइम ही निकालना है ना, तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अगर मुझे ये एंगल पता हो, सपोज कर लो ये एंगल पता है, देन वी कैन कैलकुलेट व्हाट. If we know this angle, velocity will remain constant. Velocity will remain what? Constant, because in magnetic field velocity doesn't change. And if velocity is constant and it is moving in a circle centered at C, and you know the radius, तो मैंने इसको roughly ऐसे बनाया. And if you know the radius, you can simply say that omega of that thing will be equal to how much? V by R. R is equal to how much? MV by QB. Okay. So you will be simply writing here this thing, omega will become equal to QB by N. Okay. So we can calculate what will be the omega of this charge particle. Done it. If we know omega, and if we know how much angle it covered being in the magnetic field, we can calculate time as theta by omega. तो हमारा टास्क क्या है? ये थीटा को निकालना. अब आप यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दो. दिस एंगल यू कैन इजिली कैलकुलेट. हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस एंगल? अगर आप देखो, सपोज कर लो ये थीटा है, ठीक है? So this was the radius of cylinder, right? So this is equal to, let me indicate this by capital R, and let me indicate the radius of trajectory by small radius r. Then tan theta can be written as what? It can be written as R by R, if I'm not wrong. It is this, ठीक है? And R can be written as what? MB by QB. So theta हमारा कितना है? Values तुम लोग put कर लेना. Tan inverse R by R. Sorry, this is theta by 2.
दिस होल वाज थीटा, सो थीटा बाई 2। ठीक है, सो थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ? थीटा आ रहा है तुम्हारा 2 tan inverse r/r. Now how you can calculate time? So time you can calculate like 2 tan inverse theta by what? कितना आया था? सॉरी यार, 2 tan inverse r/r divided by omega. Omega is how much? QB by m. So this is 2m by QB tan inverse r by r. Put the value of small r, that is mb by qb. So 2m by qb, 2m by eb, right? And you will get the answer. Done. So this way we were required to solve the question. हमें काफी practically और सही way में जाना है. We need to look कि magnetic field कौन से shape में trapped है. ठीक है? That is also important here for drawing out the diagram. क्योंकि अगर ऐसे solve करने चले जाओगे, you will get it wrong. ठीक है? We have to be careful with this thing. Done है? चलो. How many of you did this question? I feel like diagram was not visible in the question examination hall. Was it the case? Yes. कुछ बोल नहीं रहे तुम लोग, शांत बैठ गए हो बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन ये था, व्हाट वाज द केस, डिड रॉन्ग, ओके। तो क्वेश्चन ये था, देयर इज दिस थिंग, राइट? This is what? This is a source of light something, and then there is a cylindrical rod given of certain length, 64 centimeter. Cross section area radius is given. It is kept at a distance of 50 r from the source. Source is having power that is already given. ठीक है, and this basically this cylindrical shape surface will receive the power, and it is able to absorb only 80% of whatever is falling on it. So efficiency is 80%. And let's say it has a temperature of TA in a steady state. The surface B is radiating energy. So whatever, देखो real life में होगा क्या, whatever energy this end A is absorbing, because which its temperature will increase, it will transfer that heat to the point B through conduction. So at point B, energy is reaching, and in a steady state, point B will also have certain temperature, right? So let's say B has a temperature of TB. What is given here is wavelength emitted by it with maximum energy density is around this wavelength. So you have learned one law in KTG, or in radiation, I would say, that is Wien's displacement law. It talks about when a body is at certain temperature, it radiates energy, right? It radiates energy, and it radiates energy at different wavelengths, at very different wavelengths. But for one particular wavelength, we got intensity maximum. Graph looks like this. That maximum, that wavelength for which intensity getting emitted is maximum is given by Wien's displacement law, जिसको हमने कैसे लिखा था? Lambda mb is equal to T. So if the body has a temperature T and its lambda m is given, we can calculate T, right? So here lambda m is given, how much it is? 10 to the power 5 into 10 to the power minus 10. So basically 10 to the power minus 5 into B. B is written as 3 into 10 to the power, how much? I have written it correct. Formula सही मैम लिखा है ना? टी राइट लेफ्ट साइड आता है, बी राइट साइड। लैम्डा टी कांस्टेंट होता है, लैम्डा इंटू टी। वही मैंने सोचा, मैं ये क्या कर रही हूँ, पर यस, दैट इज कांस्टेंट, राइट राइट। तो दिस इज दिस, राइट? लैम्डा एम तुम्हारा क्या होगा? 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू टेम्परेचर वी डोंट नो, बी इज इक्वल टू हाउ मच? 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. सो बेसिकली टी इज इक्वल टू 300 केल्विन. So this is the temperature of B, right? So B का टेम्परेचर हमें पता है 300 केल्विन.
Now we needed to calculate the value of TA. Done it? And it is also said that its thermal conductivity is not constant. It is the function of temperature profile. So K is equal to T by TA. K is equal to T by TA. So basically steady state में तुम लोगों को पता होगा conduction जब होता है तो what happens? At this end, if temperature is TA, and at this end, if temperature is TB, let's say T is greater than TB. That is the case over here. Heat will flow in this case such that temperature profile along the length of the rod will vary like this. So here temperature is maximum TA. Here the temperature ऐसे profile बनाओ कुछ. Here the temperature is TB. This is TB, and this is your TA. And along the length, this temperature profile will linearly decrease such that temperature gradient is constant. That is dt by dx is what? It is a constant. That you have already studied, right? So according to this, in a steady state, every point on the rod will have different temperature. And since thermal conductivity is depending on the temperature, at if you are taking any dx length here, any dx length you are considering, then if this point has temperature T, this will have temperature how much? T minus delta T, because along the rod from A to B temperature is decreasing. And here K ka value will be how much according to our question? It will be how much? K is T by TA. So if here the temperature is T, then T by T. Because temperature is just slightly changing across dx length, we can assume that thermal conductivity is almost constant, and that is T by TA. ठीक है? So this is the case here. अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारा उतना डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि यहाँ पे हमने सिलिंड्रिकल रॉड लिया है. सिलिंड्रिकल रॉड लेने से ये क्वेश्चन कैसे इजी हुआ, लेट्स टॉक अबाउट इट. जैसे देखो, यहाँ पे तुम्हारा एक स्फेरिकल सोर्स है, ठीक है. So you already have studied one thing, that from a spherical source, energy will get out like this, and it will feel like energy is coming out of this spherical surfaces like this, right? So if you talk about any small portion of this spherical surface, then how much intensity is falling at a distance r? Let's talk about, I'm talking about this small area. Okay, let's say this small area is dA. And this small area dA is at a distance r from the sphere. Okay, and energy that this source is radiating per unit time is P, that is the power. What is the energy getting received per unit time at this point? What it will be? So simple है, energy intensity हम निकाल सकते हैं. Energy intensity क्या होता है? Energy falling per unit area. That is your intensity. So on this total area, how much energy per unit time is falling? P, because that is the power of source. How much energy will fall on this small area? So सबसे पहले आप क्या निकालोगे? सबसे पहले आप निकालोगे energy falling per unit area per unit time. So 4 pi r square. If this surface has area dA, you will calculate it like this. This much energy it is receiving. And while taking cylindrical rod, it became easy because अगर तुम लोगों ने लिया होगा पिल बॉक्स पढ़ा था ना इलेक्ट्रोस्टैट में, याद करो हमने गॉसियन सरफेस लिया था कंडक्टिंग सरफेस के जस्ट आगे वाले पॉइंट पे. अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था तो गॉसियन सरफेस हम सिलिंड्रिकल ऐसा लेते थे. क्यों? क्योंकि स्फीयर का जो छोटा सा सरफेस ऐसा है ना, वो सिलिंड्रिकल कर्वेचर में फिट हो जाएगा. ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है ना कि देर इज अ रॉड सिलिंड्रिकल, सो बेसिकली दिस पोर्शन कैन बी अज्यूम्ड एज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द स्फीयर इटसेल्फ. ठीक है. सो यू कैन सिंपली राइट हियर एनर्जी रीचिंग एट पॉइंट ए. अगर एनर्जी रीचिंग एट पॉइंट ए तुम्हें निकालना है, ई ए क्या करोगे? पावर बाई 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज एनर्जी रीचिंग पर यूनिट एरिया. और उस पर्टिकुलर सरफेस का एरिया कितना है वो आप देख लो. सो इसका आर कितना है? 2 बाई रूट अंडर पाई. 2 बाई रूट अंडर पाई का स्क्वायर इंटू पाई. दिस विल बी द एरिया, राइट? So this will be the total energy getting received by A. Now question became easy क्योंकि अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे कितनी एनर्जी आ रही है, and whatever energy is coming here will reach here, right? Because in conduction after steady state we assume that
no energy is getting accumulated or absorbed anywhere, right? So whatever is entering at A will reach at B. अब आप कंडक्शन का इक्वेशन लिख डालोगे dq by dt, that is power that we have already calculated EA, and this will be equal to K A delta T by, again we cannot write this formula for the whole length of the rod because K is changing. So for a small segment we will do write this equation, and K A delta T, let's say we are talking about this small length dx. So Ka delta T by dx. Let's indicate delta T by dt. Small temperature difference. Let's say here temperature is T. So this dq by dt is EA, and this is your K into A. And what else is the case? dt. dt आप लिख सकते हो ना? ओके, dt को आप ऐसे ही रहने दो. ओके, K को मुझे लिखना था ना, T बाई कितना था? K क्या था? T बाई टी ए, राइट? सो टी बाई टी ए आप यहाँ पे लिख डालो डी टी बाई डी एक्स. अब एक काम करो, dx को आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले जाओ. ई ए डी एक्स, dx will vary from 0 to 64 centimeter, right? And here if you take a by ta will be constant, इसको आप बाहर ले लेना, and then you will get t dt. Temperature will vary from where to where? We will move from A to B. So temperature will vary from TA to TB. This way you can solve the question easily. You can get the value of TB. लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा होता कि सपोज कर लो यहाँ पे ए स्फीयर है, सोर्स है, डेफिनेटली इट विल सेंड आउट एनर्जी इन अ स्फीयर, ठीक है? एंड इफ लेट्स से देयर वाज अ केस लाइक देयर इज अ डिस्क केप्ट हियर, नॉट सिलिंड्रिकल सरफेस लाइक दिस, अगर डिस्क होता तो आप कैसे निकालते? सॉलिड एंगल लगाते हैं. हाँ, सॉलिड एंगल तब लगाकर हम यूज कर ले, ठीक है? सो सॉलिड एंगल का तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होगा. सॉलिड एंगल का फॉर्मूला इसमें क्या होगा? 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज वॉट एवर एंगल इट इज फॉर्मिंग हियर, ठीक है? सो दैट वे वी कैन कैलकुलेट. ठीक है, चलो. क्वेश्चन वाज नॉट डिफिकल्ट, आई वुड से. क्वेश्चन 14. 14 कितने लोगों ने किया बताओ? अगेन क्वेश्चन में थोड़ा ही कॉन्सेप्ट यूज करना था कि अगर तुम्हारा स्प्रिंग वर्टिकल प्लेन में है तो वो कैसे रोटेट करता है, कैसे ऑक्सीलेट करता है. हॉरिजॉन्टल प्लेन वी ऑलरेडी नो, वर्टिकल प्लेन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, उसी डिफरेंस को यहाँ पे काउंट में लेना. एंड दैट टू इन नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन. कितने लोगों ने किया इस क्वेश्चन को, ये बताओ पहले. मैंने किया था, मेरा आंसर गलत था। अच्छा, गलत आया था. चलो ठीक है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. तो क्वेश्चन ये, हमारे पास स्लीट S1 है, स्लीट S2 है, and then there is a plate. This plate is initially just kept there. Suppose कर लो तुम उस प्लेट को पकड़े हुए हो, ठीक है? So at t equal to 0, what is happening? You are leaving your hand away from the plate. क्या होगा? प्लेट नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है? और अगर नीचे की तरफ जाता है तो ये सेपरेशन d क्या होगा? चेंज होगा. डन है. We were asked the rate by which fringe width will increase. रेट पूछा था, by which fringe width will increase when acceleration of plate is 0. So basically we were talked about calculating dB by dt, where beta is what? Beta is the fringe width, lambda d by d. D dash लिखती हूँ because here d is not constant. Let's talk about the variable. So it is said that when acceleration of plate is 0, सबसे पहले तुम यहाँ पे YDAC को भूल जाओ. You just remember this thing कि यहाँ पे हमारे पास एक स्प्रिंग है, this is fixed here, and then there is a mass attached here, m. If you are releasing it from rest, what will happen? क्या होगा? सबसे पहली चीज तो ये होगा कि it will go down. It will go down. Up to what distance it will go down until a spring force will not get balanced by gravitational force acting on the mass m, right? So mg is equal to kx naught. जैसे तुमने ये पढ़ा है ना, सिंपल ये भी केस वैसा ही है. एक स्प्रिंग है, ये मास ऐसे ही. तो तुम्हें पता है कि जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, ये सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में होगा, देन यू वोंट से स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ. लेट मी कम हियर. जैसे ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो क्या होता है?
इक्विलिब्रियम की अगर आप बात करो तो बिकॉज ऑफ mg फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा, एंड एट इक्विलिब्रियम यू विल से दैट स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड एट इक्विलिब्रियम by how much distance? So mg is equal to kx naught. X naught is equal to mg by k. So at equilibrium it is extended by x naught distance, and from this equilibrium position, if you are going to disturb it, then what will happen? It will perform SHM, and it will perform SHM about this equilibrium position, that is at a distance of mg by k from the unex in unextended length of a spring. So let's say from this point, and it will perform SHM of amplitude x naught itself. Okay, so we have studied this thing while reading vertical equilibrium. So this is the thing. अब same चीज तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन में लगाना है, कुछ नहीं करना. So width will increase when acceleration of plate is zero. Acceleration zero कहाँ होता है? SHM की बात करो. Where the acceleration is zero? It is, अगर आप SHM की बात करते हो, you write minus omega. Omega square होता है ना? This is, yes, omega square x, right? So this is the acceleration का formula. Where acceleration is zero? Acceleration is zero at a point where x is equal to zero. And x zero का मतलब हम क्या लेते हैं? X zero का मतलब mean position, right? Extreme position को we take it as x equal to x naught. So mean position is what? It will be taken as x is equal to zero. Then this will become at a distance of x naught, and further it will go behind by x naught, and with x naught amplitude it will keep on performing SHM around x equal to 0. तो x equal to 0 यानी कि मीन पोजीशन पे तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या होगा? 0. एंड मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होता है, वेलोसिटी क्या होती है? मैक्स. वेलोसिटी क्या होती है? मैक्स. अब चलो हम क्वेश्चन पे जाते हैं. हमें क्या निकालना है? बीटा लैम्डा डी डैश बाई डी. अब डी डैश को आप कैसे लिखोगे? इनिशियली दिस सेपरेशन इज डी, ठीक है, and because it is performing SHM, let's talk about any general, let's take any general distance x, that is this plate is x distance below. Let's say, so beta को आप क्या लिखोगे बताओ? Beta को you will simply write what? Beta is equal to lambda by small d d plus x. ठीक है, and here you will do what? You have to calculate the rate of change of fringe width, right? So you will do here d beta by dt, integrate it, simple. So lambda d by d को अगर आप integrate करोगे, you will get 0, it's constant, right? Plus lambda by d dx by dt, and this is 0. So d beta by dt is equal to how much? If you see here, d beta by dt is equal to lambda by d into v. So when it will be maximum? When, I mean, this is constant, right? So when this will be maximum, so V max तुम्हारा कहाँ मिला हमें? V max हमारा मिला, sorry मैं क्वेश्चन से डिविएट तो नहीं कर रही. The rate by which fringe width will increase when acceleration of plate is zero. Sorry, maximum नहीं पूछ रहा है. When acceleration is zero. So when acceleration is zero, what is the value of velocity? Let's talk in this way. So in that case, velocity will be maximum. Maximum velocity is written as what? That is omega a, if you remember. That is omega a, right? Now you write the value of omega, you write the value of a. So a I have already told you that is x naught. So that is basically mg by k. And what is this omega? For a spring mass system, omega is root under k by m. This is this, right? So you simply put in the value now. अगर आप put करोगे तो lambda by d लिख दो यहाँ पे, v को root under k by m, एक काम करती हूँ, g को यहाँ लिखती हूँ, and this is m by k. So this will become how much? Lambda g by d root under, this is m by k. So what should be the answer? Root under lambda g by d root under m by k. N is 1 actually. So answer will be 1. ठीक है? That way we can calculate. यहाँ हमें क्या निकालना था? Difference between two fringe widths when plate is at rest for a moment. ठीक है? So one fringe width when it was here, right? Two fringe width कहने का मतलब initially and finally पूछ रहा है. Finally, when it is at rest for a moment, when it will be at rest? Simply, it will be at rest at its extreme position, and its extreme position you will locate like what?
एक्सट्रीम पोजीशन आप कैसे लोकेट करोगे बताओ? So basically, if this is the point where spring is not extended, right? So first, here you will locate the mean position. That is how much distance below. That is your mg by k. Let's say this is x naught distance below, and again, plate is at rest for a moment. So we need to talk about the extreme position, compression में extreme position. So let's say it is this. So it will be further x naught below. So basically from this point, the extreme position will be at a distance 2x naught below, right? समझ रहे हो? डन है. सो एक के लिए अगर आप निकालोगे लैम्डा डी बाई डी है फ्रिंज विथ, दूसरे का क्या हो जाएगा लैम्डा बाई डी, और डी में आप कितना जोड़ोगे 2x नॉट आप जोड़ दोगे. ठीक है. एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिफरेंस. यू जस्ट कैलकुलेट द डिफरेंस, यू विल गेट द आंसर. आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं एक्स नॉट मीन एक्सट्रीम कैसे कर रही हूँ. सो बेसिकली ऐसा ही था ना, ये ऐसा है. अगर तुम इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम जब स्ट्रेट ऐसी बात करते हैं ना, हियर स्प्रिंग इज नॉट एक्सटेंडेड, डेल्टा एक्स इज 0, and this is the equilibrium position. Around it oscillates, but here in rest it will, a spring will be extended by certain distance, that is x naught. So this is the equilibrium position, and around this it will perform SHM of amplitude x naught. So if you have to talk about its one extreme position from this point, then it will be at a distance 2x naught below. So that is how we needed to read this question. Okay? Chalo. How many of you did this question? I was expecting, the moment I looked this question, I was like, you must have done it. Anyone who did it? मैम मैंने किया था, पर इस बार मेरी फिजिक्स काफी टाइट गई है, तो मेरे शायद हो सकता है गलत हो. Okay. Okay. तो फिजिक्स में मेरा दिन अच्छा नहीं था, पर कोई नहीं, कोई नहीं. दिन का क्या है यार, अच्छा खराब होता ही रहता है, क्या कर सकते. Ma'am, according to you, this paper, overall physics paper was moderate to difficult or difficult? Mean, what is your opinion on that देखो, मुझे paper? मुझे लग रहा था ऐसा कि जैसे देखो, ऐसे भी जे एडवांस में बैठे हो, इंटेंशन ये नहीं कि मुझे सारा क्वेश्चन करना है ना. इंटेंशन ये है कि मैक्सिमम के क्वेश्चन हो जाए. तो अगर मैंने पेपर को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि 7 to 8 क्वेश्चन यू कुड हैव डन इजीली. यस. अगर तुमने प्रैक्टिस करा है सही से फिजिक्स को, तो 7 to 8 क्वेश्चन, जैसे मैथ्स द कॉलम जो भी क्वेश्चन था काफी इजी था. कैपेसिटर का क्वेश्चन था, थर्म ये इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन था. सो दे वर इजी एक्चुअली. फिर रोलिंग का भी जो क्वेश्चन था एक दो, वो इजी आए थे, नॉर्मल आए थे. सो मॉडरेट ही मैं कहूंगी. मॉडरेट इसलिए क्योंकि 50% क्वेश्चन तुम करने के पोजीशन में थे. व्हाट यू थिंक? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. ओके. ओके. सो इस क्वेश्चन में मैंने तुम लोगों को क्लास में बताया था, इफ यू रिमेम्बर, मैंने बोला था कि अगर एक कोई भी सॉलिड स्फीयर है, इट हैज अ चार्ज डेंसिटी ऑफ रो इनसाइड, एंड देन देयर इज अ कैविटी. कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, मैंने डिराइव भी किया था. मैंने बताया था कि कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो तुम्हारा कौन सा डायरेक्शन में होगा, किसी को याद है? देखो, ओरिजिनल सॉलिड स्फीयर का सेंटर और यहाँ पे जो कैविटी है उसका सेंटर, उसके लाइन को मिला लो. हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इन अलोंग दिस लाइन, C1 C2 के अलोंग था. अगर याद हो तो आया था रो C1 C2 divided by 3 epsilon naught. This was the value of electric field that we got without, that we got with this portion of charge removed. ठीक है. So this was electric field then inside the cavity. ठीक है. सो बेसिकली क्वेश्चन ये था, जैसे हमने किया था ना, कि ये एक सॉलिड स्फीयर है जिसके पास चार्ज डेंसिटी रो है एट एनी डिस्टेंस r. हाउ यू राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड? रो r by 3 epsilon naught. दिस इज व्हाट वी राइट. ठीक है. देन आई सेड दैट इफ यू आर टेकिंग अ कैविटी फ्रॉम हियर,
निकाल लिया उतने पोर्शन को, then what will be the value of electric field inside the cavity? Then we calculated, we located center of these two things. Let's say this is this is C1, this is C2. Then electric field at any inside point of the cavity was equal to how much? Rho C1 C2 by 3 epsilon naught. And C1 C2 पे वेक्टर साइन मैंने दिया है, मींस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके अलोंग था, यानी कि ऐसा पैरेलल था. So we got a constant value of electric field inside the cavity. So inside the cavity, electric field is uniform and it is directed along these two centers. अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ. क्वेश्चन में ये बोला था कि P पॉइंट है, ठीक है. P पॉइंट पे you are having a charge, I guess. Yes, you are having electron and you are releasing electron at point P, ठीक है. The time after which electron again touches the sphere. अब तुम कैविटी की बात करो. Let's talk about cavity here. ठीक है. सपोज करो यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज है, यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज है, क्यू चार्ज है. मैंने इसको फ्री छोड़ दिया. फ्री छोड़ दिया, ये किधर जाएगा? इस रीजन में. उसको जो भी फोर्स उसको अफेक्ट करेगा, दैट विल गो देयर. सो इन दिस वैक्यूम रीजन देयर इज constant electric field, uniform electric field. So charge will move along the electric field, right? If it is positive, in the direction of electric field. If it is negative, opposite to the direction of electric field. So electric field ka direction is along C1, C2. Here it will move along this line. Okay? So it will move like this. Here it will again strike the wall. Done है? हमसे क्या पूछा गया था? Time after which the electron again touches. तो आप टाइम निकाल लो. टाइम के लिए आप क्या करोगे? You will simply calculate this distance, right? So this distance it has traveled with, I mean, initially you are releasing it, so initial speed is 0. So if you talk about here, initial speed is 0. What is the acceleration? That is QE by M. And if it is covering S distance, then you will write S is equal to UT plus half AT square. U is 0. So 2S by A root under will be the value of T. Now how we can calculate S? आप ध्यान से देख लो, यहाँ पे कैविटी में जब आप पॉइंट P पे रिलीज कर रहे हो, this point P with center is making what angle? It is making 45 degree. It will move like this. It will strike here. अब देखो ये डायग्राम मैंने काफी अनरियल बना दिया, ओके, है ना? क्योंकि ऐसे में अगर मैं एंगल वैसे लिखूंगी कहोगे क्या दिख रहा है. कोई नहीं, यहाँ पे लेते हैं पॉइंट को. पॉइंट P यहाँ था, ठीक है. इट विल अगेन स्ट्राइक द वॉल हियर. Let's say this angle was 45 degree. At this point, if you will join it with center, this is also radius. So basically, how much is this value? ये value कितना होगा बताओ? This will also be 45. 45, 45, 90. This whole is 180, so this is 90. And if this is 90, you can easily calculate this distance. Let's say this is x. You can calculate now, है ना? X by r को 1 by root 2 लिखोगे, ठीक है? X is r by root 2. Total will be 2x. So s is equal to 2x. That is your root 2r. You simply put the value, you will get the answer. So इसमें तुम्हें ये चीजें याद होना चाहिए था. तुम्हें पता होना चाहिए कि ये ऐसे होता है. I'm not going to derive it because I have done already in the electrostat revision session. I have told you this thing. ये important है, प्लीज इसको दिमाग में रखना. Now if you talk about this question from paper 1 or 2, whatever it is, इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना था बताओ? कितने लोगों ने किया पहले मुझे ये बताओ. Anyone who got the answer? Yes, ma'am, me. Okay, very good. हो गया था ना? हाँ. आ गया था मैम, तो इसका तो आ गया था. आ गया था, सबका आ गया था. देखो यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट तुम्हें लगाना था कि तुमने अगर मल्टीपल स्लैब्स के थ्रू रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा ना, तो तुम्हारे देखो कोई चीजें, कुछ चीजें ना दिमाग में होनी चाहिए टू गेट क्वेश्चंस डायरेक्टली. आई मीन टू हैव अ हिटिंग इफेक्ट ऑन आवर माइंड, कि क्वेश्चन हिट करे डायरेक्टली. सो इफ यू नो कि डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स है, ऐसे ऐसे ऐसे, दे आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 n2 n3 and so forth. यहाँ पे सपोज करो n है. there's so many plates. If here you are striking anything, any light, sorry arrow उल्टा दे रही हूँ मैं,
This is the incident light, angle of incidence is I, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर ले लो. यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा इसके लिए वही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा. अगेन दिस विल कम लाइक दिस, वॉट एवर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हियर सेम विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर, एंड सिमिलरली सो ऑन. ठीक है. सो अगर आप सारे ही पॉइंट्स पे, अगर आप सारे पॉइंट्स पे स्नेल्स लॉ लिखोगे ना, फर्स्ट पे लिखोगे तो क्या लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडिया, so n1 sin I will be equal to how much? Let's say here angle of refraction is r1 and मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर का n0 लिख लो, फर्स्ट के लिए n1 लिखा है मैंने, तो n1 sin r1. अब सेकंड के लिए अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? इंसिडेंट एंगल क्या है? sin r1. सो एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हाउ मच? r2. सो लेट्स राइट n2 sin r2 is equal to n1 sin r1. ठीक है. सिमिलरली थर्ड पे लिखोगे, फोर्थ पे लिखोगे. अगर मैंने सिर्फ दो पे लिखा, तुम्हें इफेक्ट क्या दिख रहा है? ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली फाइनल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वेट हो रहा है. इफ देयर आर सच टू स्लैब्स ओनली, इफ देयर आर सच n number of slabs, then initial thing n0 sin I will get equated with refractive index of nth slab into sin E, that is final angle of refraction, that is emergence angle here I am taking. ठीक है. सो हमारे क्वेश्चन में भी तुम्हें ये चीज लॉजिक अगर लगा लेते तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता. क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है. ठीक है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल कहने का मतलब क्या? वी आर हैविंग सो मेनी स्लैब्स ऑफ very small thicknesses, dx thicknesses, right? And at certain point the light is what? The light is simply suffering total internal reflection. Such is the case, I guess. What's the question? The incident onto the flat surface, the angle of incidence is this, the refractive index of material varies like this, maximum depth reached by the ray. क्योंकि देखो मैक्सिमम डेप्थ रिच्ड कहने का मतलब क्या? वो रे तभी तक अंदर जाएगा जब तक कि रिफ्रैक्शन हो रहा है. इफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल हैपन, रे विल नॉट गो फर्दर डीपर, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक. ठीक है. सो लेट्स से वो एक्स लेंथ तक अंदर गया. ठीक है. सो एक फाइनल स्लैब आप एक्स डिस्टेंस पे ले लो, इनिशियल स्लैब यहाँ था. यहाँ पे अगर आप लिखोगे स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट, यू विल राइट म्यू दैट इज 2 sin 37 इज इक्वल टू एनीथिंग यू विल राइट. यहाँ पे आर का वैल्यू कुछ और होगा, सो म्यू समथिंग इनटू साइन आर. और इस पॉइंट पे जैसे बहुत सारे डीएक्स स्लैब के लिए लिखोगे, और इस पॉइंट पे अगर आप लिखोगे तो एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन समथिंग होगा विच विल बी अगेन डिफरेंट. सो लेट्स राइट इट लाइक म्यू साइन आर. अगेन वेरिएबल के टर्म में मैंने लिख दिया, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को क्रिटिकल एंगल के लिए मैं 90 डिग्री लेती हूँ. सो हियर एट ए डिस्टेंस x रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2 minus x एंड साइन 90. इन दोनों को मैंने कट कर दिया, मैंने सिंपल 2 स्लैब करके डिस्कस कर दिया. सो यहाँ से अगर आप करोगे 2 into sin 37 is 6/10 एंड दिस इज इक्वल टू 2 minus x. 2 minus x को 2 minus x लिखो 1. सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 6 is equal to 10 minus 5x. 5x is equal to 10 minus 6, that is 4. X is equal to 4/5. This will be the answer. तो अगर तुम्हारे दिमाग में वो चीज क्लियरली समझ में आता कि अच्छा हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, in that way we can discuss it. So you could have done it. How many of you did this question? मैंने किया था एक, और इसका आंसर मेरा शायद सही आया था. Okay. Anyone else? मतलब मैंने पेपर पे सॉल्व किया था तो मेरे ऑप्शंस तो बन रहे थे. Okay. Okay. तो बेसिकली ये क्वेश्चन को अगर मैं किसी चीज से रिलेट करूं तो तुम लोगों ने 2 मास सिस्टम का ऑक्सीलेशन पढ़ा होगा, इफ यू हैव स्टडीड इट. तो सिंपल मैं उसको डिस्कस करूंगी. एससी वर्मा में भी क्वेश्चन दिया हुआ है. आई ऑलवेज से कि अगर तुम्हारे कोई जूनियर्स है ना या किसी को भी पढ़ना हो, उनको जरूर बोलना एससी वर्मा क्वेश्चन सॉल्व करे. कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है, बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, तुम लोग कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद करने लगोगे. So strong basic के लिए that book is very much suggested. I will suggest always. So this is a spring. There is mass m1, m2. Let's say this is a 2 mass spring system. ठीक है. इस क्वेश्चन
ऐसे क्वेश्चंस को इजीली करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपल सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से बात करते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से अगर बात करो तो सपोज कर लो तुमने एक मास M2 को कुछ शिफ्ट किया। ठीक है, सो यू शिफ्टेड इन मीन्स समथिंग एक्सटर्नली एक्टेड, and because of that shifting, that external thing, suppose we are giving impulse, so we are giving it velocity v, done। उसके बाद हमने उसको एक्सटर्नली डिस्टर्ब नहीं किया, डन है। सो इनपुट क्या था, v, कितना मोमेंटम, m2v मोमेंटम we gave to this block, and after that we are not disturbing it. After that whatever is happening because of whatever force is acting between m1 and m2 because of a spring, done it। तो इनिशियल सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अगर आप चेक करोगे यहाँ से तो कितना होगा, इनिशियली ये 0 पे है, इसको कितना वेलोसिटी हमने दिया v, तो आप लिखोगे m2v डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, एंड एट एनी अदर टाइम, velocity will remain what, it will remain sorry, velocity of center of mass will remain same like this। ठीक है, सो एक स्पेशल केस आता है वेयर मास m1 एंड m2 इज इक्वल। उस केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी अगर तुम ध्यान से देखो v/2 हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का। एंड देन देयर आर डिफरेंट डिफरेंट केसेस। केसेस ये है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम कॉम्प्रेशन कब होगा, क्योंकि सिंगल मास सिस्टम में हमें पता है मास की वेलोसिटी 0 हो जाती है, देन कॉम्प्रेशन या एक्सटेंशन मिलता है। व्हेन एक्सटेंशन और कॉम्प्रेशन विल हैपन इन सच केसेस, कब होगा, व्हेन आई मीन व्हाट विल हैपन, बताओ, व्हाट डू यू थिंक। देखो, अगर अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मैंने ये अभी अभी बोला ना कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से हम इसको बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। सो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इनिशियली इट्स मोमेंटम इज हाउ मच, लेट्स टॉक अबाउट m1 इज इक्वल टू m2, देन आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट मोर इजिली। सो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, v/2। सो इनिशियली इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, pi, center of mass का mass है 2m, its velocity is v/2, so this is basically mv। at any other time its momentum will remain mv। ठीक है, so there is no question that as compression and extension velocity of both the masses will become 0। ठीक है, what will happen here, अगर अगर तुम रियल लाइफ केस इमेजिन करना चाहो तो कुछ ऐसा है, इसको इधर की तरफ खींच रहे हो तुम, राइट की तरफ। ठीक है, सो उसकी वजह से इस स्प्रिंग में टेंशन आएगा, और ये टेंशन वट एवर इज द कॉज उसको डिक्रीज करना चाहेगा, एंड सो दिस मास will also start moving in this sense। Why? To decrease the extension। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग चाहेगा to decrease its extension, and at maximum compression and expansion always remember velocity of these both masses will be equal। कैसे, जैसे तुम ध्यान से सोचो, ये मास जो है ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है और ये भी v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, दोनों सेम रेट से एक एक v रेट से स्प्रिंग को एक्सटेंड करना चाह रहा है और दूसरा कॉम्प्रेस करना चाह रहा है, नेट चेंज क्या होगा, 0। ठीक है, सो एट दैट पॉइंट वी विल से दैट स्प्रिंग हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम कंप्रेशन और एक्सटेंशन, उसके बियॉन्ड और वो कंप्रेस या एक्सटेंड नहीं हो सकता। सो सिंपल इस क्वेश्चन में जो हमने क्वेश्चन देखा ना, इस क्वेश्चन में सिंपल यही लॉजिक यूज करना था कि एट मैक्सिमम एक्सटेंशन और कंप्रेशन its velocity of these two blocks would be what, equal। but again there is one more twist, और ट्विस्ट ये है कि हमने अभी जो केस देखा वो ये देखा कि ये जो मासेस है ना वो ग्राउंड पे है। ठीक है, एंड आई मीन ट्रांसलेशन में है, बट हियर द मासेस आर नॉट इन ट्रांसलेशन, दे आर गोइंग इन अ राउंड ट्रेजेक्टरी। सो वी विल रादर टॉक अबाउट ओमेगा। सो हियर वी विल से एक्सटेंशन और कॉम्प्रेशन विल बी इक्वल व्हेन देयर ओमेगा विल बी सेम। ठीक है, तो ओमेगा के टर्म में हम इसको डील करेंगे। डन है, द वेलोसिटी ऑफ बी इमीडिएटली आफ्टर इम्पैक्ट इज हाउ मच, यस ये तो वी नॉट होगा, ये सबको टिक करना था, क्यों, क्योंकि ए बी सी तीनों का मास सेम है, मास सेम है ना, एंड इलास्टिक कोलिजन इज हैपनिंग। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, bodies exchange their velocity, so a is having velocity v naught, b after collision will have velocity v naught, so I mean immediately after impact its velocity has to be v naught, it should be or not, what do you think? Okay,
You can check all these things. The velocity of c when stretch in the spring is maximum. अब maximum stretch के लिए आप देख लेना, जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बताओ। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी जाएगी इनिशियल, अगर आप बात करो तो इनिशियल एनर्जी क्या है, ओनली काइनेटिक इज देयर, हाफ एम वी स्क्वायर, एंड दिस kinetic energy will then get converted into what? Potential energy of the spring. So half kx square, but not completely it will get converted into potential energy, क्योंकि मैंने बोला है कि मैक्सिमम compression और extension में दोनों ही ब्लॉक का ओमेगा सेम होगा, यानी कि दे आर हैविंग स्पीड, राइट, ओमेगा आर r1 ओमेगा r2। सो तुम यहाँ पे एनर्जी इक्वेशन कैसे लिखोगे, एनर्जी इक्वेशन ऐसे लिखना, हाफ इंटू मास ऑफ विच वाज दैट, मास ऑफ बी इंटू वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू at extreme position, if you see half kx square, this is the extreme extension, plus half m b था ना ये b vb का square, plus half m a, if that is a, then अगर c है तो c लिखना, that is c basically, so c m vc का square, ठीक है। सो ऐसा कुछ लिखोगे आप, और ये VB और VC कैसे निकालोगे, सो VB इज इक्वल टू हाउ मच, B इज एट अ डिस्टेंस, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, 2r डिस्टेंस पे है, ओमेगा दोनों का सेम होना है ना, सो ओमेगा इंटू 2r, एंड VA इज इक्वल टू हाउ मच, ओमेगा इंटू r। अब तुम सोच रहे हो कि मैम ओमेगा कैसे निकाले, तो ओमेगा आप निकाल लो, मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर दो। अगर एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि हम कंजर्व कर सकते हैं, है ना, इनिशियली वी वर हैविंग ए बॉडी विच इज हैविंग वेलोसिटी v नॉट, सो इन इफ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज हाउ मच, am v naught into 2r, this is the angular momentum of system initially. Finally at the maximum extension, vb, b is having velocity vb, c is having velocity vc, ठीक है, एंड इफ बोथ ऑफ दीज आर हैविंग वेलोसिटीज, और दोनों की वेलोसिटी सेम सेंस में होगी, हमेशा याद रखना, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, मैक्सिमम एक्सटेंशन या कंप्रेशन पे ये इधर है, ये भी इधर ही है, डायरेक्शन सेम है, ठीक है। सो ओमेगा सेम लोगे सेम डायरेक्शन में, सो इन दोनों का मोमेंटम ऐड होगा, आर क्रॉस एम वी बी आर, आर क्रॉस एम वी सी आर को इक्वेट कर दोगे, ठीक है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, ओमेगा, डन it. So you, by angular momentum conservation, you can get omega, and after that you can put it in this equation. Basic concept था तुम्हारा कि maximum extension होगा कब, और जब होगा तो B और C के velocity का status क्या होगा, that was the basic thing here. वो आता है, you would have solved this question, क्योंकि conservation तुम लोग खुद भी करते हो, है ना, basic। Again, this question I included because we have not done velocity wala thing. How many of you tried it and did it? मैम मैंने सारे क्वेश्चन ट्राई किए थे, तो मैं हर क्वेश्चन में कह सकता हूँ आई ट्राइड इट। Okay, okay, ये तो यूएसपी है मेरा। okay. Anyone else? मैम कैलकुलेशन एरर्स हो रही थी और मतलब टाइम भी ज्यादा हो रहा था, तो छोड़ दिया फिर। यार देखो, एक चीज मैं तुम लोगों को बता दूं, जेई एडवांस में कैलकुलेशन अगर तुम्हें सही सही आता है, कैलकुलेशन एरर लग रहा है, साफ साफ करने की कोशिश करो प्लीज, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर तुम लोग का एग्जाम में छूट रहा है ना, यू आर लूजिंग अ मार्क, आई मीन फॉर फ्री। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, यू जस्ट नीड टू पुट इन द फॉर्मूला। सो कैलकुलेशन ही यहाँ पे गेम था और कुछ नहीं था। सो अगर तुम लोगों ने वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है मिरर में, अच्छा +6 की जगह -6 कर दिए, वही सब गलती की है तुम लोग। तो मतलब सिंपल है कि डायग्राम क्लियर बनाना है और सही से लिखना है चीजों को, ठीक है। तो जिन लोगों ने कुछ नहीं किया है इसमें, मैं उनको बता दूं कि क्वेश्चन है कनकेव मिरर का या फिर लेंस का क्वेश्चन हो, किसी का भी हो, वेलोसिटी मिरर का, ऑब्जेक्ट का, जैसे देखो तुम जो फॉर्मूला पढ़ते हो ना, लेट्स टॉक अबाउट मिरर क्योंकि क्वेश्चन मिरर का है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा है ना, मिरर के लिए पढ़ा है। और ये v क्या है, u क्या है, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस
V is the image distance. This all these distances you are measuring from where? From the pole. And pole is where? On the mirror. So all these distances are with respect to mirror. This is the I mean important point. डन है. अगर तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है v माइनस वन करो प्लस u माइनस वन करो इक्वल टू f माइनस वन. इफ यू गो ऑन टू डू दिस तो v माइनस वन को अगर आप इंटीग्रेट करोगे यू विल राइट व्हाट dv माइनस वन dt प्लस du माइनस वन बाई dt इज इक्वल टू हाउ मच df माइनस वन बाई dt. This is going to be zero because this is a focal length. Now, what is this? इसका क्या होगा? I don't need to explain it. I know dv by dt plus minus how much? 1 by u square du by dt. Now, what is this dv by dt and du by dt? So, dv by dt क्या होगा? Velocity of image with respect to mirror, right? And that too in which direction? Along this direction, along the principal axis. So, that is taken as I cap. ठीक है. सो यहां से अगर आप लिखोगे ना यू विल राइट हियर वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस साइन v स्क्वायर बाय u स्क्वायर velocity of object with respect to mirror. And this is along the principal axis. This is along what? Along principal axis. Now there is one more term written over here. वो है तुम्हारा velocity का j component. So j component कहने का मतलब क्या है? तुम लोग मिरर में अगर ऐसे देखो, if object is kept here at certain distance u, image is getting formed here at certain distance v. Let's say height of object is this, and here height of image is this. So if u will change, अगर u change करता है, v change करेगा, and in that case image की velocity, image का height क्या होगा? Change करेगा. समझ रहे हो? इमेज का हाइट क्या होगा? चेंज होगा. सो मैग्निफिकेशन को अगर आप लिखते हो u बाई क्या लिखते हैं? v बाई यू लिखते हैं, राइट? v बाई यू, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज v बाई यू, राइट? तो इफ यू राइट हियर dm बाई dt यहाँ, अच्छा ठीक है, इसको करने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं j डायरेक्शन की वेलोसिटी का मतलब क्या है. सो दैट इज बेसिकली हैज टू डील विद, सपोज कर लो एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है j डायरेक्शन में, इसका मतलब इधर जा रहा है. So basically, as it will go up in this sense, its height from the principal axis is going to change. So object की velocity क्या हो रही है? Change हो रही है in j cap direction. ठीक है. So magnification को हम एक और वे में लिखते हैं, height of image by height of object. ठीक है. So यहाँ से अगर आप height of image पता है, I mean नहीं भी पता है, if you want to calculate velocity of object image relation in the j cap direction, that is in a direction perpendicular to the principal axis, do differentiation with this equation. ठीक है. So यहाँ से आप क्या लिखोगे? Okay, I should not do this first. m is equal to लिखो m h naught is equal to how much? hi. This thing I can write. ठीक है. अगर मैंने ये यहाँ पे लिखा है, you just see here clearly m is variable, right? क्योंकि m is v by u, v and u are changing, m is variable. And if m is variable, we cannot simply take it as a constant and differentiate h naught. So we need to differentiate it like there are two variables. So first you will write m dh naught by dt plus h naught dm by dt is equal to dhi by dt. ठीक है. And again, these heights are getting taken from where? I mean, you are taking these heights from this thing, this principal axis. Again, that has to do, I mean, a second, let me check here. Velocity of object is given as, with respect to ground, is given as this. So if mirror is moving, then yes, principal axis is also going to change. अगर mirror तुम्हारा move कर रहा है, तो principal axis भी move कर रहा है ना. अगर mirror vertical direction में अगर move कर रहा है, तो principal axis is also moving up or down like that. ठीक है. So मैं इसलिए ये डिस्कस करना चाह रही थी. क्यों मैंने बोला ये चीज? बैठ जाता है यार. dhi/dt कर रही थी मैं. Okay, I forgot it. I don't know why I said that. Something came into my mind. Anyway, so this is m, right? m को क्या लिखोगे? dh naught by dt. dh naught, okay.
कन्वेंशन के लिए मैंने बोला था एच नॉट बाई डी टी को क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर. वाई विथ रिस्पेक्ट टू मिरर? बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस सिचुएशन इज ऑल्सो चेंजिंग. प्लस एच नॉट क्या बोलोगे, एच नॉट इंटू डीएम बाई डी टी को डीएम बाई डी टी रहने दो. H naught is H naught. This is equal to dhi by dt is what? Velocity of object, sorry, image with respect to mirror. And these are we dealing with the perpendicular direction. ठीक है. And dm by dt तुम यहाँ से निकाल सकते हो इस इक्वेशन से. अगेन यू नीड टू डू द इक्वेशन, क्योंकि dm by dt करोगे, v and u दोनों वेरिएबल है, तो पहले u को कांस्टेंट रखोगे, dd by du माइनस v du by dt डिवाइडेड बाई u का स्क्वायर, लाइक दिस. तो dm by dt का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा. देन यू नीडेड टू पुट इन ऑल द वैल्यूज प्रॉपरली टू गेट द आंसर. दिस वाज द कॉन्सेप्ट आई से. ठीक है. ये क्वेश्चन सबने किया होगा. आई एक्सपेक्ट ईच वन ऑफ यू टू डू दिस क्वेश्चन. यस मैम, मैंने किया था और मेरा आंसर सही भी था. सबका आया था सही सही. चलो, should we discuss it or should we leave it? मैम आपकी मर्जी, आप करवा दोगे तो भी कोई बात नहीं, नहीं करवाते तो भी कोई बात नहीं. Okay. मैम स्किप कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद हम एक एक्स्ट्रा डिस्कस कर पाएंगे. ओके ओके ओके. तो इसको स्किप करती हूँ. जस्ट गिव मी सम टाइम. ठीक है, एक सेकंड टाइम देना मुझे. आई विल बी जस्ट I mean stopping this here, then I will do again. Okay, give me some. Sorry, I will be doing it now. Actually, I forgot to add more questions. Sorry. चलो ठीक है. So how many of you did this question? I mean, this came some last to last also, and I discussed then also, but this is important. How many of you were able to do this? देखो, ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है एंड यू शुड बी रिमेम्बरिंग इट. मैम मैंने किया था और उसका आंसर शायद मेरा सही है, मतलब ऐसे मैंने देखा नहीं, पर शायद सही है. Okay, okay. Sohil, you did it? Because last time I feel like I explained this to you. Okay. Okay, so what I want to explain here is, let's read first the question. So there is a cylindrical region, and this cylindrical region is of radius r. There exists a varying magnetic field B. dB by dt का value तुम्हें given है. dB by dt is how much? K. And then there is a charged particle having charge Q. It is placed at a point P at a distance D. You can see here. Now the particle is moved in direction perpendicular to OP by an external agent up to infinity, so that there is no gain in kinetic energy of the charged particle.
So basically what we are doing here is there is a charge particle, right? There is a charge particle at point P, and we are moving it along this line and taking it up to infinity in such a way that its kinetic energy is not increasing. I mean, here its velocity is zero, then here also its velocity is zero. So overall, I'm doing work in taking this charge particle from P to infinity, but then there also should be some other factor doing work same as me, such that total work getting done is zero. क्योंकि देखो, work done by all forces को क्या लिखते हो? Change in kinetic energy. And if kinetic energy is not changing, it is same. It means work done by all forces is zero. We are definitely doing work in taking charge from P to infinity, because it is said in the question. Then there should be another factor also doing the work, same as me. And that is why all, and in such a way, these two works are getting added to zero, which is that another thing. So another thing की अगर आप बात करो, तो यहाँ पे हमें क्लियर है इस रीजन में क्या है, फ्लक्स इज चेंजिंग, एंड यू ऑलरेडी नो इफ देर इज अ रीजन लाइक दिस, there is flux changing, then because of flux changing, EMF will get induced minus d phi by dt. Right? This is the EMF. And if there is EMF, we can talk about what? We can talk about I mean, we can talk about the presence of electric field. ठीक है? तो तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, आई मीन dv इक्वल टू क्या लिखते हो? dv इक्वल टू लिखते हो E डॉट dl. ठीक है? So basically, here if you talk about, I mean, EMF is getting generated. Let's talk about my charge particle is here. Let's talk about charge particle is here at point Q. And what will be the direction of electric field because of induced EMF at point Q? क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, definitely we are applying force such that to nullify this electric field वाला factor. डन है? क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ा होगा पोटेंशियल के डेफिनेशन में, व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू सर्टेन पॉइंट Q, external force acting is just opposite to the electric field. Why? Because we have to take the charge in such a way that its velocity is not changing. Same thing is here, right? So at point Q, मुझे ये बताओ तुम लोग इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाओगे? That is the question. So basically तुम्हें यहाँ पे याद ये रखना है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड getting induced, E field is getting induced here, and here induced electric field will be circular in nature. It is going to be circular in nature. Electric field circular नहीं होता, लेकिन in the case of induced electric field, it can be circular in nature. So it is here circular in what? It is here circular in nature. और यहाँ पे अगर आप निकालोगे ना, so if it is circular in nature, let's talk about at a distance r we are calculating electric field. So at a distance r, you will draw a circle like this. I mean, in this region there is electric field, so in this region electric field is circular, so it is like this. At this point we are dealing with our concerned question. So at this point electric field क्या होगा? Will be tangent to the arc here. Now electric field direction will be in which sense? It will be in this sense or in this sense? Let me know. कौन से sense में जाएगा बताओ? Yes? मैम यही समझ नहीं आ रहा है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ गई? Okay. कैसे आ गया? जैसे मैम देखो, मैंने सोचा कि स्टार्टिंग लाइक इसी पोर्शन में जो जहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है वहीं लाइक जो भी होगा वहीं होगा, आसपास कुछ होगा ही नहीं, फोर्स ही समझ नहीं आई क्या लगेगी. हाँ, तो तुम्हें यहाँ पे ये समझना था ना, जैसे देखो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बोला है ना चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है मतलब क्या, ईएमएफ जनरेट हो रहा है, और ईएमएफ जहां भी होता है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज गेटिंग जनरेटेड. डीवी इक्वल टू क्या लिखते हो? ई डॉट डीएल लिखते हो ना? सो यस मैम. if EMF is getting generated, electric field is there, right? So that electric field कैसा होता है, that you need to learn basically. So जब भी तुम्हारा induced EMF की वजह से electric field तुम निकाल रहे हो ना, that will be circular in nature, डन है? That will be along what? Circular in nature. अगर तुम्हें direction निकालने में confusion हो रहा है, do one thing. जैसे एक सिंपल सा
एक सिंपल सा केस लो, कंडक्टर। कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी ऐसे कनेक्ट करते हैं हम। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस सेंस एंड हियर करंट इज आल्सो इन दिस। सो करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो, सेम होगा। होगा। नाउ टॉक अबाउट इंड्यूस करंट हियर। इंड्यूस करंट की बात करो आप, क्या होगा इंड्यूस्ड करंट? सो हियर dv by dt is equal to k is greater than 0. So basically inward flux is increasing, and if inward flux is increasing, induced EMF will be in such a way that will oppose this change. So if inward is increasing, that will try to decrease it, and for that it will generate current, outward current it will generate, right? So outward current can, outward magnetic field, sorry. So outward magnetic field कब generate होगा? If current is flowing in this sense. अगर हमने imaginary curves लिए, then in imaginary curves electric field, sorry, current will flow like this. If there are curves like this, then current will flow like this. Because of this induced current, magnetic field will be outward, which will try to decrease the increasing inward flux. So this is the direction of what? Current. और यहाँ पे मैंने बोला ना, इस point, कोई भी general point मैंने लिया था. Let's say this is the point, and at this point there is a charge Q, and here if you draw that imaginary line, then across this imaginary line there is electric field existing in the direction of current. So at this point if you have to calculate, जैसे यहाँ पे direction of current बताओ, tangent बनाओगे, यहाँ पे direction of current बताओ, tangent, sorry, tangent बनाओगे. So basically electric field will be in the direction of current. So here electric field is in this direction. समझ रहे हो? Am यस I? मैम, हो गया क्लियर। ओके। सो अब यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लो। अब क्या होगा, हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? देखो अगर तुम लोग सॉल्व कर लेना, ये एंगल थीटा ले लो, ठीक है? सो अगर ये एंगल थीटा है, तो इधर की तरफ कंपोनेंट कितना है? ई कॉस थीटा, एंड देन हियर दिस एंगल इज हाउ मच? ई साइन थीटा, एंड ई साइन थीटा विल नॉट डू एनी वर्क ऑन द चार्ज मूविंग, क्योंकि ये मूव कर रहा है हॉरिजेंटल लाइन के अलोंग. सो दिस फोर्स इज नॉट गोइंग टू डू एनी वर्क, जीरो. ई कॉस थीटा विल डू वर्क. सो ई कॉस थीटा कितना वर्क करेगा? क्यू ई कॉस थीटा, and same amount of work we will do in opposite sense. So if QE cos theta is acting in this direction, we will apply external force in this direction such that F external is equal to E cos theta. ठीक है? सो इफ यू हैव टू कैलकुलेट, क्या निकालना क्या था? वर्क डन, ठीक है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, सो बेसिकली वर्क डन बाय ई कॉस थीटा. सो दैट यू कैन नाउ कैलकुलेट ई कॉस थीटा का वर्क डन. निकालोगे तो क्या करोगे आप? लेट्स से दिस इज, लेट्स से दिस वाज, कितने, कौन सा डिस्टेंस फिक्स है? दिस डी इज फिक्स, राइट? और इसको मैंने x ले लिया. सपोज कर लो यहाँ से x है, ये डिस्टेंस आप निकाल लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वेरिएबल आएगा, ठीक है? सो बेसिकली अगर मैं इधर बनाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. यहाँ पे चार्ज है हमारा अभी, और ये डिस्टेंस इज गिवन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन, दैट इज डी, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट अंडर. सो अगर आप वर्क डन की बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लोगे, है ना? ईएमएफ निकाल लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा. नाउ द थिंग इज व्हाट, वर्क डन के लिए एफ डॉट डी एक्स करोगे, एंड dx वेरिएबल यहाँ पे है. सो एफ ई क्यू ई कॉस थीटा, कॉस थीटा को आप यहाँ से क्या लिखोगे? थीटा मैंने इसको लिया था ना, कॉस थीटा आप लिख लोगे यहाँ से, है ना? एक्स के टर्म में, dx के टर्म में इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है? तो यू विल गेट दैट डन. ये क्वेश्चन कितने लोगों ने किया था ये बताओ मुझे. दिस क्वेश्चन इज द इजीएस्ट वन आइट से, ये छोड़ना ही नहीं था तुम लोगों को. हम कर लिया था ना। कर लिया था सभी ने? ओके. तो एक काम करो, मुझे सभी लोग अभी प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ क्या आ रहा है. आई जस्ट वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग इट. लेट मी नो द आंसर. यू कैन डू इट, राइट? यस मैम। सॉल्व करो और जल्दी से बताओ.
Yes, anybody? Option A is correct. Okay, I will check the option, let you know. Okay, option A correct है. और मैम ऑप्शन बी करेक्ट है मैम, सी डी गलत है. एक सेकेंड. ऑप्शन ए और डी करेक्ट बोल रहे हो? ऑप्शन ए मैम अहमदाबाद और बॉम्बे सही है, चेन्नई और धनबाद गलत है. ओके, बट अगर मैं आंसर सही देख रही हूँ तो तुम्हारा गलत आ रहा है. लेट मी चेक अगेन. ACD आ रहा है मैम. मैम हाँ हाँ ए, हाँ. मैम ए बी डी नहीं होना चाहिए, ए बी नहीं होना चाहिए. नहीं, वो तो नहीं आ रहा. वर्क डन कांस्टेंट आ गया था, मैक्स पे इंडिपेंडेंट आ गया था. मैं वापस करता हूँ मैम. क्या हो क्या सकता क्या? Yes, somebody said something. Sorry, I lost the look. क्या हुआ बताओ? मैम वर्क डन साइड कांस्टेंट आ गया था, एक्स के इंडिपेंडेंट आ रहा था. ई का वैल्यू क्या लिखे हो? पहले सबसे पहले मुझे ये बताओ सभी लोग. मैम मैक्सवेल इक्वेशन से लिख दिया था. E डॉट डी एस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, फ्लक्स का मतलब चेंज. हाँ हाँ. तो तुमने ऐसा लिखा होगा ना, ई डॉट डीएल. अगर इक्वेशन सही आ रहा है तो फिर ऑप्शन क्यों गलत ला रहे हो? ई डॉट डीएल इक्वल टू क्या होगा? ईएमएफ, यानी कि ए एरिया इनटू व्हाट डीबी बाई डीटी, राइट? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, राइट? फ्लक्स को क्या लिखते हो? एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड. सो आई मीन फ्लक्स को यहाँ लिखोगे ए इंटू बी डी बाई डी टी. ए इज नॉट चेंजिंग, राइट? बी इज चेंजिंग, इसलिए मैंने ऐसे लिखा. अब ई ऐसा लिखोगे, डीएल को इंटीग्रेट करोगे. ई इज कांस्टेंट, राइट? ई कांस्टेंट क्यों होगा? क्योंकि अगर यू आर टॉकिंग अबाउट एनी डिस्टेंस आर, देन फॉर एनी डिस्टेंस आर, दिस imaginary sphere will be at every point of this imaginary sphere is at equal distance from the center, and hence magnetic field uniform. E को बाहर ले लो. dl a db by dt. if you are going to write dl का क्या लिखा है सबने? क्या होगा बताओ? 2 पाई r करोगे ना? ठीक है. सो r कितना था? r था तुम्हारा, दिस वाज हाउ मच, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. सो e इंटू 2 पाई r का वैल्यू लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. दिस इज ए डीबी बाई डी टी. अब उस वर्क डन में तुमने पुट किया होगा. सो ऑप्शन वन क्या है? वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट. यू नीड टू सॉल्व इट. आई मीन यू नीड टू सिंपली सॉल्व द वर्क डन वाला इक्वेशन. आई डोंट हैव एक्स्ट्रा पेज, अदरवाइज. अच्छा है ना, तो मैं सॉल्व करती हूँ. व्हाट फाइनल आंसर यू गेटिंग? एनीबडी कैन टेल मी वर्क डन का? ई डॉट डीएक्स किया है ना सबने, और ई कॉस थीटा करना. करेक्ट आंसर एक्चुअली इज ए सी डी. सो एक ही चीज तो हमें निकालना है यार. मैं निकालना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा मुझे, एंड आई फील लाइक आई मे गेट रॉन्ग, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ. बट आई कैन डू. ऐसा नहीं है. कितने लोगों का आ गया आंसर एग्जैक्ट? ए सी डी. मैम मेरा आ गया, मैंने पहले कैलकुलेशन एरर कर दिया था 4D के केस में, ओके. और मेरा सही आ रहा है, ए सी डी आ कितने लोग गया. कितने लोग कैलकुलेशन में ये हो रहे हैं? आई मीन कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है कितने लोगों का अभी भी? मैम मेरा हुआ था बट मैंने फिर सही कर लिया. ओके ओके. तो कर लेना फिर, तुम लोग तो इंटीग्रेट कर लोगे. ठीक है. अच्छा, और कोई क्वेश्चन था जिसमें तुम लोगों को डाउट था? मुझे ये बताओ पहले. कोई ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा परेशान किया हो? मैम सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन थे शायद 2. सेमीकंडक्टर आ रहा है सिलेबस में? सेमीकंडक्टर तो नहीं था ना मैम यार? था तो. ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर किस में आता है? ओके. ट्रांजिस्टर तो मैम देखा जाए तो सेमीकंडक्टर में ही आता है. नहीं, वो तो सेमीकंडक्टर के अंदर ही होगा. मैंने जो सिलेबस देखा था मुझे नहीं दिखा था, इसलिए मैंने मतलब पूछा. क्वेश्चन थे. क्या क्या क्या? मैम सेमीकंडक्टर्स नहीं आ रहे हैं मैम, एडवांस का पार्ट वो नहीं है सेमीकंडक्टर, मतलब जो नया हाँ सिलेबस निकला था मैम उसमें नहीं है. क्वेश्चन थे टेस्ट में. हाँ, एक टेस्ट में क्वेश्चन थे. था, एक नहीं क्वेश्चन नहीं था. वो, नहीं यार, और भी क्वेश्चन थे. डायोड से भी इंक्लूडेड थे, मैंने यस देखा. मैम, दोनों में था एक एक. हाँ, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि एक्चुअली वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो तो मैंने बोनस उसको. क्वेश्चन मैम,
क्या बाबू, क्या बोला मैम तुमने? बोनस 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 मैम, क्वेश्चन नहीं था ना मैम, बोनस? बोनस। हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए, पता नहीं क्यों इंक्लूड करा यार, इंक्लूड ही नहीं करना था। व्हेन आई सॉ आई मैम वाज लाइक क्यों। मैम हम्म। अवंती के पेपर सेटर्स भी एनटीए से थोड़ा इंस्पायर हो गए हैं, इसलिए आउट ऑफ सिलेबस चीजें देने लग गए हैं मैम। एनटीए वालों ने तो बाउंसर मारा है, कसम से मजा आ गया। मैम सबसे ज्यादा बुरा तो नीट वालों के लिए लग रहा है। एनटीए वालों ने कहा पूरा कि इस बार पूरा, ऐसा पेपर बनाएंगे नहीं नहीं, बनाएंगे एनटीए वालों ने फ्रस्ट्रेट होके किया यार, इतना इतना ज्यादा स्कैम हो रहा है ना, आई मीन स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स के साथ एक ही चीज बुरा हुआ कि जो लोग क्वेश्चन पढ़े होंगे, टफ लगा होगा, और अगर उन्होंने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया सही से, दे लॉस्ट द फाइट। आई मीन अदरवाइज अगर उन्होंने कंट्रोल करके जितना आया उतना सही से किया होगा, दे विल बी इनटू द कॉलेज। पहले क्या था, क्वेश्चन पुटिंग द फॉर्मूला, गेटिंग द आंसर, सो इट हाँ। वाज ऑल लाइक अ रेस, है ना। इस बार सोचना था उन्हें। तो पहला क्वेश्चन एनटीए देखा तुम लोगों ने, पहला क्वेश्चन वाज टू गुड, दैट सरफेस टेंशन वाला, यू पीपल शुड आल्सो डू दैट, गुड क्वेश्चन वाज देयर। मोशन मोशन वाले ने सोल्यूशन डाला है, देखूंगा। मैम हम्म। एनटीए वालों ने इस बार कह दिया कि अगर पेपर लीक भी हो जाए तो भी कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा किया यार, बहुत लोगों ने सफर किया, आई सीन माई स्टूडेंट सफरिंग, मुझे बहुत बुरा लगता है, मतलब दे आर गेटिंग 16 590, दे आर गेटिंग इन, नॉट गेटिंग इनटू कॉलेज, दिस इज सो पुअर, आई मीन दिस इज सो मैम पुअर। बात ऐसी है ना कि अगर पेपर टफ आया तो कट ऑफ लो हो जाएगी, तो अगर मान लेते हैं कि पेपर सच में हाँ मुश्किल आया है और अनडूएबल था जैसा लोग बता रहे हाँ हैं, तो फिर कट ऑफ लो हाँ। हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली सी बात है ना कि जहाँ लेकिन 720। लेकिन फिजिक्स में फिर भी आई वुड से 20 से 30 क्वेश्चन दे वुड हैव डन इजीली। ऐसा कुछ टफ वैसा नहीं था जैसा ये लोग चिल्ला रहे हैं, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे 15 16 जिसमें बहुत ज्यादा टाइम देना था, और टाइम कम होता है ना, क्वेश्चन नंबर 45 है, जैसे एडवांस में क्या होता है, यू आर हैविंग 18 क्वेश्चन एंड यू आर गिवन टाइम, सो चलो फेयर गेम है, बट देयर 45 क्वेश्चन, लेस टाइम, तो बच्चे फंस गए, ये प्रॉब्लम ज्यादा हुई। चलो कोई मैम नहीं, टेस्ट में बताओ, किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो लेट मी नो। हाँ बोलो। कुछ नहीं मैम, कर लिया था ओके पेपर तो वैसे रोज होके, बट हाँ, कल ओके। 7 तारीख का। मैम कल एक 7 तारीख। क्वेश्चन है लाइक पेपर वन पेपर टू में, हम्म। बता देना एक बार। आप लोग मुझे ये बत कर दो, क्वेश्चन मार्क कर दो कौन कौन सा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, लेट मी ओपन द क्वेश्चन हियर फर्स्ट। पेपर वन बोल रहे हो ना? पेपर टू का 8th। पेपर टू, एक सेकेंड। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या था? ओके अच्छा, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, सोन फ्रिक्शन क्रॉस सेक्शन एरिया इज दिस, वेलोसिटी, density of liquid, mass of cart, initially cart is at rest, velocity at 10 second, then x is what? क्या डाउट क्या हो रहा था इसमें? वही नहीं मैं लगी, एक हो काम नहीं रहा था। करती हूँ, एक काम करती हूँ, तुम्हें ये सॉल्व करके मैं भेज देती हूँ, ठीक है? ओके मैम। आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो एंड आई विल सेंड यू, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दो अभी, आई विल बी सेंडिंग ईच वन ऑफ यू। नो मैम कोई बात नहीं है। नहीं है? मेरी अच्छा ज्यादातर एक, गलती कैलकुलेशन की होती है, मैं क्या कहूँ। एक क्वेश्चन और मुझे दिख रहा है, कुछ पेपर टू का क्वेश्चन नंबर 4 सबने किया है क्या? मैम 1 मिनट देखने दो मैम, मुझे याद नहीं है। दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पेपर टू मैम। यस मैम, हो गया था। वो तो हो इक्वेशन गया से कर लिया था मैंने, कोऑर्डिनेट लगा दी थी। हाँ एक्चुअली, एक्चुअली मेरा सही किया। भी हो गया था, पर बस हो ही गया था, बड़ी मुश्किल से हुआ था। आंसर सही आ रहा था, फोर चलो प्लस रूट टू अपॉन 4 - रूट 2 का स्क्वायर। मैम मैंने सही तो है, सर्कल की इक्वेशन लिखी और एक्स वाई से वो लगा दिया, एक्स इक्वल्स टू वाई बहुत से इंटरसेक्शन पॉइंट। बहुत ये सही किया। मैम ये तरीका मेरे को जब मैं घर पहुंच मतलब रफ में करने बैठा तब मेरे दिमाग में आया कि मैं ये भी अप्लाई कर सकता था, बट बाद में आया। सही कह रहे हो, कुछ कुछ हाँ, लोग होते हैं ना जिनको बाद में ज्यादा चीजें स्ट्राइक करती हैं, इट हाँ मैं हैपेंस। उनमें से हूँ, मैं उनमें से हूँ, ये तो मैं मानता हूँ। और एक चीज और, तुम लोगों ने ये किया था ना, 16 17 किया था ना, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस ऑफ ये मॉडर्न फिजिक्स,
मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन प्लीज कोई भी मत छोड़ना, कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, प्रैक्टिस इट मोर, क्योंकि वो काफी स्कोरिंग होता है, उससे क्वेश्चन छूटते नहीं जल्दी। ठीक है, सो पेपर 2 में 17 18 आई कैन सी दे आर आल्सो फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स। चलो ठीक है, फिर मैम बहुत किसी सारे को क्वेश्चन में नेगेटिव भी नहीं थे, तो उससे 8-10 नंबर मिल गए। चलो बढ़िया है। कितने आए इस बार तुम लोगों के टेस्ट में, इफ यू पीपल आर कंफर्टेबल इन शेयरिंग देम? मैम मेरे 360 में से 210 बने। वाह, क्या हुआ मैम? ओके वरुण, ठीक है, दैट्स ग्रेट, बट वरुण दैट्स गुड मार्क्स, यू विल मैम बी गेटिंग मोर देन दिस। मैम मैम मेरे भी अच्छे नंबर आए मैम, 240। मैम ऐसा मत बोलो। हाँ बहुत बहुत अच्छे, वो बहुत ज्यादा है इसलिए मैं रिएक्ट नहीं कर पा रही हूँ सही से। एक मिनट, 240 ज्यादा है? अच्छा मेरे ज्यादा है वो। अरे हाँ मैम नहीं। तुम्हारा मैम एक्चुअली ज्यादा बात क्या हुई, फिजिक्स में मेरा हाथ टाइट था, लेकिन मैथ आती थी मुझे, और केमिस्ट्री भी है। आती थी। तो मैं दैट्स नहीं मैम, फिजिक्स में मैं ये स्ट्रेटेजी पे किया ना, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं एरर करूंगा, तो मैं फिजिक्स के क्वेश्चन छोड़ते चला गया, तो टाइम बच गया। तो जब फिजिक्स का टाइम बचा, मैथ्स में लगा दिया, तो मेरे मैथ्स ने नंबर खींच दिए। सही है, मैथ नंबर आने से मतलब है किसी भी सब्जेक्ट में, ओवरऑल नंबर शुड बी आई मीन गुड, तो बढ़िया है। चलो पर सही इसी है, वरुण आई विल बी सेंडिंग यू क्वेश्चन, ठीक है, आई विल डू सेंड यू। ओके, थैंक यू मैम, ओके, और मिलते हैं। यू टेक